the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed to. ए पर्सन का मीनिंग एक आदमी का होता है. पर्सन होने से दो तीन चार आदमी होता है. समझे आप? सिंगुलर प्लूरल. तो आपका ये जो आप इतना 10-12 आदमी क्या चीज के लिए कुछ ऐसा कोई निकलता भी नहीं है. आप ऑल द डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं कर सकता है. कैसे आप ऑल द डिस्ट्रिक्ट? आरटीआई उसके लिए नहीं है. आरटीआई उसके लिए है जहाँ पे कोई स्कीम में आपको गफला दिखाई दे रहा है, कुछ सुन रहा है. उस पर्टिकुलर स्कीम को आप आरटीआई करके इंफॉर्मेशन को निकाल के एंटी करप्शन ब्यूरो में या तो लोकपाल लोकायुक्त में या तो सेशन कोर्ट में जो स्पेशल करप्शन कोर्ट है वहां पे फाइल करके उस चीज को ठीक करने के लिए. अब अंधाधुन इतना सारा स्कीम उधर गया है. उस स्कीम में से एक स्कीम तो कुछ गड़बड़ निकलेगा होगा बोलते अंधा ये में आप निशाना तीर नहीं मार सकता है. ऐसा नहीं है. तो रिपोर्ट करोगे पीआईओ या एफिलेंट प्रेजेंट. नाम आपका क्या है? विजय बोडो. BODO. The appellant present, the appellant is Vijay Bodo. Present among the other appellants, namely Nibo Pao, Tawa Yomdo, Chapat Tali, Jiten Lora, LORA, ha. वो मेरे को देखता है अभी. Uh, इन अदर्स में कौन कौन है नाम को बताओ. विजय बोडो, अरुण अरुण डोडुम, DODUM, डोडुम, अरुण डोडुम, Thai Siva, advocate and advocate Thai Siva. The appellant representing all the other appellants stated that they have filed RTI application in group in all the districts of अरुणाचल प्रदेश. सब डिपार्टमेंट में किया है. सब ऑल अरुणाचल में सिर्फ फॉरेस्ट में. इन all the forest divisions of all the districts of Arunachal Pradesh for all the schemes that have been sanctioned and executed by the concerned forest divisions in every district. While hearing and recording the statement of the appellant, the Vijay Bodo, it is
very clear that they have formed a syndicate to file RTI applications in all the districts of all the forest divisions of Arunachal Pradesh, which is in fact not bona fide, bona fide on the appellants because Section 6 of RTI Act states that Section 6 Clause 1 states that a person who desires to obtain वो इसको सेक्शन 6 प्लस 1 उसमें पूरा लिख दिया ना प्लस 1 2 को नहीं and the RTI Act cannot be a profession by anyone who simply go around all the districts and file RTI application in the apprehension that there might have been some corrupt practices or misuse of funds. The statement of the appellant present today, stating on record that there are some 10 persons together that are engaged in filing RTI applications in all the districts of Arunachal Pradesh, in all the departments. Such practice cannot be encouraged by the Commission for the reason that such practices without any reasons for filing RTI application in the intent of harassing the PIOs and with certain hidden agendas cannot be entertained in the near future also because the Act RTI Act 2005 has been passed by the Parliament of India without any clear
thought about what the applicants slash form slash the appellant here and filing bogus applications should be never encouraged, should be never encouraged because in such great scenario whereby a group of people take up filing RTI application as a profession and go to each and every district and file RTI application in each and every department for each and every scheme that has been sanctioned, approved, and executed by concerned departments is like teaching an arrow in the dark with anticipation that certain loopholes might be unearthed so that the CIOs can be taken to task. Next, हमेशा next slide, the lawmakers of RTI had never imagined that the act will be taken up as a profession to harass PIOs and out of that process the appellants can make out some bugs, which is perceived in the instant appeal after hearing from the from one of the appellants that they are a syndicate which who go around to file RTI application in all the departments, in all the districts of Arunachal Pradesh. And under the above statement of the appellant, representative appellant, and the facts stated by him, the commission hereby takes serious note of the misuse of the RTI Act 2005 and in order in order to protect the sanctity of the RTI Act 2005, the commission hereby dismiss this appeal with a strong wording to the appellants not to file RTI applications with hidden agenda to simply harass the
public officers, and out of which to derive benefits improperly. And hence, the this appeal is dismissed and closed once for all. आपका ये इसको आप शिवा ताई का ही शिवा को ना सेक्शन को पढ़ने दीजिएगा। और आप अभी जो बोला है कि आप लोग 10 आदमी है कोर्ट में, आप बोला है, और आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिवीजन में फाइल करता है। वो उसके लिए आरटीआई एक नहीं बना है। आरटीआई एक प्रोफेशनल वो कमाई दमाई के लिए हर एक ऑफिसर को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बनाया। आरटीआई एक है जो आदमी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उसको मिलने के लिए, ना कि पूरा पब्लिक ऑफिसर को ऐसा 10 100 आरटीआई फाइल करके ब्लॉक करके उससे कुछ निकाल, ऐसा नहीं। ये जीएफओ जीवांग फॉरेस्ट डिवीजन है, ऑनलाइन है हिमांशु, जीएफओ जीवांग फॉरेस्ट डिवीजन। yes sir, present है. Morning sir. So good morning. So what I was telling the appellant is that he has stated before me in the open court that he has, not he, they have, they are 10 persons, 10 people filing RTI application in the entire district of Arunachal Pradesh, in all the forest divisions of Arunachal Pradesh. This is not done. RTI Act was not promulgated for such things. This is straightly harassing a public officer. Well, that is what I am advising this young man. So I have dismissed this one of the appeal, and I am dismissing this appeal also against you. I am dismissing it Okay, thank you outrightly. sir. आपका जितना भी ऐसा केस है, आपका ही सारा केस है। हाँ, आपका 500 का 500 अपील को हम डिसमिस कर दे रहे हैं। आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी आरटीआई फाइल करता है, आप अपना नाम में फाइल कीजिए। ग्रुप में होने के बाद दैट इज सिंडिकेट। ए सिंडिकेट इज इलीगल एक्चुअली। आप कहीं भी सिंडिकेट नहीं बना सकता है। सर उसमें तो आप जो ये अभी तो निबो जो मेडिकल में, हाँ, तो आप तो निबो पर आने देगा आप? नहीं 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 नहीं, वो हम आने देगा नहीं। आज उसका हियरिंग है, आपका मुख से सुनना है। आप लोग हर एक डिपार्टमेंट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई 10 आदमी जाके फाइल करता है, वो प्रोफेशन हो गया ना। दिस कैन नॉट बी ए प्रोफेशन। आरटीआई वाज नेवर promulgated to be a profession by someone. अरे आप वो जीएफओ सर को देखो, आपका 10 एप्लीकेशन होगा, आपका जैसे 10 आदमी ठीक 10 एप्लीकेशन, अरे वो पब्लिक सर्विस करेगा ना, आपका आप लोग को इंफॉर्मेशन देने में रहेगा। आई एम हियर टू जज दैट। आप लोग अभी से अपना अच्छा सीरियस थिंग्स में आप आरटीआई फाइल करो। अब ना कि वो रोइंग जीएफओ डिवीजन में इतना करोड़ रुपया का इतना स्कीम एक साथ चला गया, उसको ब्लाइंडली हम आरटीआई फाइल करने से एक ना एक में हमको कुछ घपला दिखाई देगा होगा बोल के, यू कैन नॉट हिट द एरो ब्लाइंड। ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ, हाई कोर्ट भी आपको इसको एंटरटेन नहीं करेगा, अब जैसे बताया है। इसको सेक्शन 6 को क्लियरली आप देखना है। इट क्लियरली सेज दैट ए पर्सन नहीं बोला है, ए पर्सन इज एन इंडिविजुअल, इज अ सिंगुलर थिंग, एंटिटी। आप लोग ऐसा नहीं होगा। आप लोग को नेक्स्ट टाइम में ऐसा करेगा, हम बैन करेगा। अभी गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में 2-3 आदमी को बाहर किया है, 20 साल वो लोग आरटीआई फाइल नहीं कर सकता है। ऐसा वो उसको अभी गुजरात हाई कोर्ट भी अपील कर दिया, बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स। अब आपका अभी बोला जैसे तो 10 आदमी आप लोग मिलके वो देर तो हाउ ही मे बी फीलिंग। एक लाइफ में रेस्पेक्ट भी तो मेंटेन करना है ना खुद का भी। अब ऐसे हरासमेंट ऐसा टेक्टिक के साथ में मत मत करो आरटीआई फाइल। आरटीआई सीरियस थिंग पे फाइल करो। अभी जैसे दापोरिजो का एक आदमी है, 6 हियरिंग्स, ही हैज बीन कमिंग वेरी ऑनेस्टली सिंसियरली, हिज केस इज सो जेन्युइन। हम लोग भी उसको देने दिल है कि इंफॉर्मेशन दो। आपका यहाँ में तो हम आई एम डिसमिसिंग ऑल द 5, तो सबको वो लिखो 335, 334, 333, 332। I am dismissing all your appeals.
आप ऑर्डर को बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें साइन कर लीजिए। सो सर आई हैव डिसमिस दिस अपील। Okay, thank you, sir. 9-10 वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। Samchigumte versus EEPWD Naharlagan. जी। Samchigumte तो आया नहीं है, कुछ बोला आप एस्टिलेंट को घूमते को कुछ खबर क्या है? सर ये 367 एक्चुअली मेरा नॉलेज भी नहीं है, मतलब ये क्या केस इसमें? ये आपका एक अर्ज उन्होंने फाइल किया है, सर तो कौन सा ये में ये लोग वही हम बोल रहे हैं ना, दे आर नॉट सीरियस। ये सर एप्लीकेंट इसका ऐसा नहीं, सबसे उनका 4-5 तो है हम लोग का। वही तो बोल रहे हैं हम। वो लोग का एजेंडा ही कुछ अलग है, सर आपका यहाँ में है कि करके फाइल करने का, वो सीरियस केसेस में फाइल करना है ना। ऐसा पीआईओ को हरासमेंट करने के लिए तो हाउ कैन बी एलो सच। अभी का लड़का वो लोग 10 आदमी है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फाइल किया है। हाउ कैन आई एंटरटेन दैट? They cannot be a profession. You have to harass the public officers and churn out some money. ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग है, धारलगन है। लास्ट टाइम जो आया तब हम लोग इसको दिया है सर, डॉक्यूमेंट दिया है जिसका, तो हार्ड कॉपी दिया था, क्लियर नहीं बोला है, तो हम उसको कॉपी भी दे ओके, उसको वो रिपोर्ट करो। रेपिलेंट समसीगुंग के एब्सेंट, the PIO present, heard the PIO. The PIO stated that whatever information the appellant has sought from his office, he has provided the information in hard copy, but later the appellant informed him, informed the PIO that some of the information in the hard copy are not legible, legible, legible. And so the PIO further provided the appellant with the soft copies of all the information that he has applied for. Next, to ascertain the statement of the PIO to be true and correct, the absence of the appellant has put a break on it, and hence to ascertain the receipt of the information from the appellant, the Commission hereby fix another date of hearing. And the Commission hereby orders, number one, the appellant to be present in the next date of hearing without fail, failing which this instant appeal will be heard and determined ex parte. Next, the PIO to be present in the next date of hearing without fail, failing which necessary action against the PIO will be initiated as per the provisions of
RTI Week 2005. Next, notice for the next hearing need not be sent to the PI as he is present in the court. Send notice to the appeal. And fix the next hearing on 10th March 1:30 p.m. 10th March 1:30 p.m. को sir, अब in case if you are unable to come, you can send someone or you can avail the online facilities that you have. So in that case, you don't need to come here. Just happy with them. देखते हैं हाई कोर्ट बिल्डिंग एंड हम लगा कि इतना जल्दी से वो कर लिया आरटीआई भी मार रही है नेक्स्ट में ईपी डजन कम और बिजनेस साइन कर लीजिए सर वो रहते हैं ओ ओके ओके हाँ जी with establishment of new medical college equipped with district referral hospital Tomoriba Institute of Health and Medical Science नाम जी सर इस इसमें आप इंफॉर्मेशन तो दे दें उसको सर ये सर ये एक्चुअली कंफ्यूजन था इसलिए इतने नहीं क्योंकि वो स्ट्रीम्स में भी दिया है तो स्ट्रीम्स का ऑन बिहाफ भी हम लोग आते हैं और सर ये में स्ट्रीम बापू सर का से एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन तो उसका थ्रू हम लोग कागज को दे दिया आगे होगा रिपोर्ट करो the implementation PIO prego tanto PIO the PIO ticket the filling एक डॉक्यूमेंट्स कर ली तो उसको हम लोग 15 डेज का ये मिला है क्योंकि जो डील कर रहा था उस छुट्टी में था तो हमें 15 डेज का the the appellant has applied for the same information in two Form A for which the second appeal hearing is also going on in the court of the Honorable State Information Commissioner Sri Sangyal Sri Bapu, wherein the appellant has applied for the same set of information to the authority of the Komoriba Institute of Health and Medical Science, Ahmedabad. Next, it is a fact that the PWD Naharnagar Division has executed the construction works of the streams. And so the information from both sources, that is the streams as well as PWD Naharnagar Division, is to be provided by the PIO of the
PWD Ahmedabad Division. Next, here is all the information here already we provided the appellant by the orders of the Honorable State Information Commission of Sanjal Singh Mahmood. Save SAVE, yeah, save means accept, save comma, save comma. One information which the instant PIO has requested for 15 days time to provide the appellant comma the information as well. Good. From hearing the PIO, the commission hereby observes number one that two trials cannot be conducted for the same course of action. Number two, it is a fact that anyone applying information for the construction of the streams infrastructure will be answered by the PWD department, Nahal division, as they are the executive agency and not the streams. So, um, yeah, the PIO has already furnished the information for which the hearing is going on in a different court of the commission for the same set of information, which is double jeopardy. List of under the above circumstances, the commission hereby dismiss and close this appeal instantly as the same appeal with the same parties for the same set of information are going are being heard in a different court of the same appeal. That's all. इसको हम सर dismiss कर दिया. एक ही चीज के लिए आप ही तो वो है क्रिम्स का बोलने से आप ही जवाब देगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो आप है क्रिम्स लोग तो मालूम नहीं होगा डॉक्टर लोग है बेचारा तो आपका जैसे बोला है वो 3 साल को जो चल रहे वो चलेंगे इसको डिसमिस कर देंगे डिसमिस आएंगे तो श्री क्या चांगरांग वर्सेस लिखा कमिल Okay. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. So the appellant has submitted a letter that he cannot be coming for the hearing today due to unavoidable circumstances.
But had the appellant turned up, I could have heard this appeal. But in the absence of the appellant, we cannot go ahead with the hearing. And but anyway, can I hear something like from you? Have you provided the informations to the appellant completely? यस सर। Yes, sir. जो आपका जो आपका सेकेंड हियरिंग सेकंड का हियरिंग का ऑर्डर था सर, ऑर्डर था जो सर, जो रेगुलर रेगुलर रेगुलराइजेशन का रेगुलराइजेशन का देने के देने लिए के सर, लिए सर, जी उसका हम उसका हम आपके वहाँ के जेरॉक्स वहाँ कॉपी जेरॉक्स पीएस कॉपी मैडम को पीएस कल मैडम दे को के कल रखा दे था। के रखा था। जी जी गई मैडम गई पे मैडम आपका पे पीएस आपका मैडम का पीएस वहाँ मैडम में, वहाँ में और जी कुछ और 5 कुछ पेजेस का 5 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स हैं। जी उसमें उसमें सर का सर का वो जो वो जो हमारा एससी हमारा साहब एससी एनएल का कमिंग एनएल का कमिंग का रेगुलराइजेशन का 5 रेगुलराइजेशन का पेजेस 5 का आपको पेजेस का हम आपको हम सर कागज सर दे के कागज रखा दे है, के रखा है, जेरॉक्स कॉपी। जेरॉक्स कॉपी। उसमें उसमें एई ए का का रेगुलराइजेशन का है, रेगुलराइजेशन का एससी है, का एससी का रेगुलराइजेशन का है, रेगुलराइजेशन का है, और सर और उसका सर ईई उसका का ईई का रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन लेटर हमको लेटर कल हमको शाम कल को मिला शाम है, को मिला उसको हम है, प्रिंट तो आउट हम करके प्रिंट मेरे आउट करके ऑफिस में मेरे रखा ऑफिस में हुआ है। रखा हुआ है। तो उसको जी मैं तो दे मैं दूंगा, देखूंगा, उसके लिए लेटर उसके नहीं लिए बना लेटर है। नहीं बना और है। सर वो और जो सर वो जो जेई का है, जेई का है, जी जेई का जो जेई सर का जो ऐसा सर है, ऐसा है, जहाँ तक जहाँ हमको तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है इन्फॉर्मेशन और जहाँ मिला तक है और मेरा जहाँ तक नॉलेज मेरा है, नॉलेज सर है, लोग सर 93 में वो 93 लोग में जेई वो अपॉइंट जेई हुआ था, अपॉइंट हुआ था। एनएल जी कमिंग एनएल सर कमिंग लोग सर लोग 93 में जेई 93 में अपॉइंट जेई हुआ था अपॉइंट हुआ सर। था सर। उस समय उस में समय में पता नहीं क्या पता नहीं क्या रूल था होगा, रूल आरआर था रूल, रूल एस्टेब्लिशमेंट रूल, एस्टेब्लिशमेंट रूल, लेकिन लेकिन उसमें उसमें जेई में जेई वहाँ में वहाँ सर वो लोग का सर उन लोग का प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड मेंशन पीरियड नहीं मेंशन है, नहीं जैसे है। आजकल जैसे हम लोग आजकल का में हम लोग सर का सर प्रोबेशन पीरियड प्रोबेशन 1 ईयर पीरियड 2 1 ईयर ईयर करके 2 ईयर मेंशन करके होता मेंशन है। होता है। तब आफ्टर तो डेट आफ्टर दैट हम लोग के पास हम में लोग एक के पास में रेगुलर एक ऑर्डर रेगुलर आता ऑर्डर है आता है कि कि अब 2 कि इयर्स अब बाद 2 अब ईयर बाद रेगुलर अब हो गया रेगुलर है। हो सर गया है। लोग का सर समय लोग के में समय में ऐसा प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड का कोई पीरियड का मेंशन कोई नहीं मेंशन है। नहीं है। तो इसीलिए तो वो जो इसीलिए उसका वो जो जो ऑर्डर उसका है जो उसको ऑर्डर है रेगुलर ही उसको मानना रेगुलर ही चाहिए मानना सर। चाहिए। जी। जब जब अथॉरिटी का जो अथॉरिटी है वो अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर में कोई प्रोबेशन पीरियड मेंशन नहीं करता है, तो दैट इज एज्यूम्ड, दैट इज टेकन एज रेगुलर। रेगुलर नहीं होता तो उसमें प्रोबेशन पीरियड को वो लोग मेंशन करेगा ना। इफ इट इज नॉट ओके। मेंशन, इट इज प्रेज्यूम दैट वो एक्सेप्टेड है एज रेगुलर। तो लेकिन बिल्कुल आज आज वो एपिलेंट नहीं आया है, एक लेटर सबमिट किया है, तो उसका भी हम लोग वी हैव टू गिव हिम द फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड। इसलिए हम लोग ओके। एक नेक्स्ट डेट फिक्स करेगा। और एक ये है इसमें। सर 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 मैं सर एक में एक एक बात एक सिर्फ बात बात सिर्फ करना बात चाहता करना है चाहता है। जी सर। हम एक बोलिए। एक सबमिशन है। सबमिशन जी बोलिए। ऑनरेबल सर, ऑनरेबल सर, दिस दिस किया केरल चंगम, संग्राम, किया केरल चंगम जो संग्राम जो आरटीआई आरटीआई सो कॉल्ड so called आरटीआई RTI एप्लीकेंट, applicant, आई कुड I नो know properly, I could properly, I know could his know name his name only and only only and after only after this this RTI, RTI, and and that this too too again again confirming confirming from the from tender the tender participations participation from my from my office. office. ये घटना ये हुआ घटना है हुआ है सर, सर, ये ये 24 को 24 एक को टेंडर एक टेंडर अगस्त अगस्त जुलाई को जुलाई टेंडर को कॉल टेंडर किया है कॉल रूपा किया है, सर्कल रूपा में सर्कल एक में एक वाइब्रेंट विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट का अंडर में। प्रोजेक्ट एक पैकेज का पैकेज नाम का है नाम है ये ये रोड फ्रॉम रोड फ्रॉम प्रीमा प्रीमा पाओ पाओ रोड टू रोड रारो टू रारो सोलोंग अंडर सोलोंग अंडर वाइब्रेंट विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रोग्राम, which was a which was time a bound time bound program। program। सर वो सर वो पैकेज का पैकेज नाम का भी है, नाम भी टेंडर है, में था, टेंडर में where I could where have I could verified that verify that there was a there was a firm firm Ragyaku Ragyaku Enterprise Enterprise in which in which K.R. K.R. Changram Changram was the was the tender tender authorized authorized representative to representative to represent that in the represent in tender। the tender। तो तो उनको उनको रग्याकू को रज्ञाकू हम को ऐसा हम तो ऐसा जानता तो है, जानता है डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट बहुत में रिव्यू बहुत मीटिंग रिव्यू चलते रहता है, चलते कौन रहता सा है, कौन फार्म सा रोड फॉर्म को कौन सा को फार्म कौन सा कर रहा फॉर्म है। कर रहा है। ये ये रग्याकू रज्ञाकू ये ये क्या चांगरा क्या को मैं छात्रों तो को मैं बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल जानता नहीं है। जानता है। इस इस डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट का स्टाफ कोई ही नहीं स्टाफ है, ही नहीं ये है, तो ये टेंडर तो का ही टेंडर है। का ही है। तो सर तो सर आरटीआई आरटीआई जरूर मिला जरूर था मिला ये था ये अगस्त अगस्त 2024 2024 टेंडर डिक्लेयर टेंडर करने डिक्लेयर का करने बाद। का बाद। तो मैं तो सोचा है मैं कि सोचा ये है क्या कि ये क्या जोकर जैसा जोकर लगा जैसा है लगा सर। है सर। एंटर 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 जो एंटर जो क्योंकि क्योंकि हम उधर में हम उधर रूपा में में रूपा में एज ए एज ए सुपरिंटेंडेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था, इंजीनियर एंड था आई वाज एंड द आई वाज द चेयरमैन ऑफ चेयरमैन ऑफ
that tender wherein additional deputy commissioner was the member tender board, then again executive engineer of Chandrajo was the member, then another senior finance and account officer was the tender board. So chairman नाटे का टेंडर का चेयरमैन नाटे हमको तो अल्टीमेटली टेंडर को तो रिकमेंड करना पड़ता है ऑनवर्ड्स, जैसा कि गवर्नमेंट को भेज देना पड़ता है. While in the scrutiny process, unfortunately, his firm has been rejected. तो रिजेक्ट करने का बाद ये पटापट तुरंत दो एप्लीकेशन आया है. ये फॉर्म नंबर ए RTI form number 8 dated 26 August 2024. Again, another date. Then 28 August. After lapse of 2 days, he has submitted another form A, wherein it is addressed to me as SHRI Ropa. Moreover, the particulars is that the details of Nili Likha coming. The superintending engineer, who is the chairman of the tender. तो सर आप देखिए, मैं एक टेंडर का चेयरमैन है, उनको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, प्लस उन्हें हमारा डिटेल बायोग्राफी पूरा डाटा मांग रहा है, लाइफ हिस्ट्री. उसमें आप देखो मेरा इंटायर सर्विस पीरियड का डाटा चाहिए, तो हमने तो मेरा तरफ से तो डिलीवरेटली हम नहीं दिया, क्योंकि मेरा पर्सनल डाटा को हम उसको एंटायरली क्यों देगा? What is his purpose? I know him because his tender is rejected. इसका it is waste of time. I felt that is waste of time. Is this really a public interest? I don't know that person. He belongs from several circle of East Coming district. But I'm a government servant in RWD. As my APIO has told, I was appointed. So if he could come honestly to me, I will tell my life history to him, so that he can write biography of my life. अब मेरा बायोग्राफी लिखने के लिए तो सर हम उल्टा पैसा दे देगा उसको मेरा कहानी लिखो, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं फील करता है. हम ये RTI तो किसी का पर्सनल डिटेल्स को, पर्सनल लाइफ का हर एक चीज को लेगा. तो नो डाउट इमीडिएट मेरा जूनियर है कि प्रमोशन में कम्पिटिटिव होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्लेश हुआ है, मतलब जैसा कि मतलब ये कि दिस माय सीनियर हैज गॉट इन अंडर लिटिगेशन, कोई कन्विक्ट हुआ था, वो मेरे को प्रमोशन में सुपरसीड हो रहा है. व्हाई नॉट सर, एवरीथिंग विल बी फर्निश्ड. लेकिन एक ऑर्डिनरी पब्लिक हु इज इन विंडिक्टिव वे में वो अपना मतलब विंडिक्टिव नेचर में मेरा डाटा है. Sir, I have submitted a representation to in your honorable office to look into this matter in the month of July this year only. मैं एक presentation submit किया था, उस समय में सर आप absent था, leave में आ गया ऐसा. Then another so peculiar thing is happening is that same person is now he is taking the RTI of detail of my work. Entire detail. And whereas by her own fundamental rights, she tried to earn herself by doing some business. And he is trying to take entire business details of my wife. So is there any revengeful attitude, whereas my wife's activity has no infliction or public interest at East Coming district, where we are from Keepayar district and Yachuli, and there is no any dispute between Keepayar and East Coming also, and my wife has no role in East Coming district. Out of the rejection of his tender firm, he has on revengeful attitude, he has started doing all these things. So I request your honorable court do the anything which is liked by honorable court, I will abide by that. APO has asked me last time that what to do. I said initially we should not encourage such people. Okay, we should not encourage such people. We should straightway deny.
Another said, Another said, Abhay told Abhay me told me that that Honorable Honorable Court, Court this this court court has has directed to directed to give all give all transfer, transfer posting, posting promotion, order, promotion this, order that. There is district. nothing harm Nothing to that harm to supply. that. I also told So that, told okay, give it, give it give it all the give it all details. details. But But asking asking my my conviction conviction detail, details, asking my asking my SIC case SIC case detail, details, asking asking my this my thing salary salary detail. details. Sir, all Sir, these all are these are very very vindictive type. vindictive So times. I So appeal I appeal your wisdom your wisdom prevails, prevails, and and let the let case. the case. I accept Accept your, because your that because that that applicant should applicant should present. present. I will I will also also comply with comply with your your direction, sir. directions, sir. Yes. This is my This is my submission. son, sir. Okay, so he has asked for the copy of service book, which I have denied. The service book copy won't be given to him. I have denied it Okay, sir. already. Okay, sir. Employer service records, including appointments and promotion, transfer, leave. These are public things. I have asked to give it. Okay. Okay. Other personal Uh, pay and allowance records also, I won't be able to give to him. I would not order him. But had he turned okay, up sir. today, I would have dismissed this case. But he is not here. Mhm. So we have to give him a fair chance of being heard. So I'll fix the next date of hearing again in the month of Okay, March. sir. Okay, sir. On Okay, 10th sir. March, 1:30 p.m. Like Okay, today, you sir. can Okay, come sir. online. Yeah. And then one more thing is, Okay. yes, we are Surely, sir. Okay, sir. sibling of the J Rupa, the SE Rupa. SE Rupa इसमें पार्टी नहीं है. SE Rupa को सीवियर आउट करो. SE Rupa का पास में अभी ऑर्डर नहीं है. ये SE Sir, at Sir, present, at I have been present, I have been transferred from transferred Rupa from to Bhopal to Itanagar. Itanagar. yes. So SE ईटानगर बोलेगा ना इसका. हमको हमको जी नहीं ये ऑफिस को ये जो ये जो एप्लीकेंट तो दिया एप्लीकेंट तो है दिया है सर, वो सर, कई वो ऑफिस कई से ऑफिस मतलब से नहीं है, मतलब वो नहीं तो है, वो तो पर्सनल दिया है पर्सनल दिया है हमको. हमको. जी जी. Now I am Now no I more am the no more the SCRWD Rupa. SCRWD I Rupa. am I am transferred as transferred as SC Design SC and Design Planning and Planning Itanagar. Itanagar. एसई डिजाइन एंड प्लानिंग ईटानगर वही जाएगा. एसई रूपा को सीवियर करेगा. एसई रूपा वो भी सेम ये पार्टी एनीमोर हियर. ठीक है. So on 10th March 2026, 1:30 p.m. You can come online again like Okay, today. sir. Okay, If sir. the appellant abstains to turn up that day, I'll dismiss of the case instantly. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. All right. Thank you, हिमांशु sir. बोलो. Thank you, sir. सर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है सर? ऑडिबल नहीं हुआ ऑडिबल है नहीं हुआ है. आवाज. 26. 26. 10 March. ओके. ओके. एंड सर Yes. एक चीज बोलना था सर, वो जो कल वो जो कल फर्निशिंग ऑफ फर्निशिंग आरटीआर ऑफ आरटीआर डॉक्यूमेंट्स हम डॉक्यूमेंट्स आपके हम वहाँ एक आपके कॉपी वहाँ दिया था, कॉपी दिया उसमें था. एक्चुअली उसमें जो एक्चुअली लेटर जो का बॉडी है बॉडी है उसमें 2 उसमें पेजेस 2 कर पेजेस हम लिख का दिया. हम एक्चुअली लिख वो दिया. 5 एक्चुअली पेजेस 5 होना था, पेजेस होना था. क्लरिकल हाँ मिस्टेक हाँ हो गया होगा 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 हमें. कुछ नहीं. Sir, item number 9. 6-1. Damdo Bogo. Serial number 9. JCHQ. Sir, deadline is very concerned and serious about this topic. So, I get this. It is matter of page number 3 says that earlier episode. All documents submitted by MS. All documents submitted by Farm MS. Loma Enterprise for upgradation of the registration of the class 3. Sir, just it is for upgradation of this farm upgradation. Then, in my humble understanding, for upgradation, it needs only sanction and work order of the 80 lakhs, either one. Then, when it is complied, then upgradation is done. So, my
this told by my client without any this, work order, any sanction in favor of this firm. They have upgraded the condition. And citing the section this 8 section 8 exemption. Just citing this section. This is uh, exemption from disclosure of information. 8D, remember, 8D, and then J. Whereas this does not comes under the any this uh, documents related to the government sovereignty, and then it if it is issued, it goes against the security of the interest of the state, and neither it falls under the this given provision. This is fair because that is any sanction order of the tender, it is under the public domain. Not at all it is the private and the third party personnel and this document. His firm name is Bhutegamra. And then same So he can come both. The enlistment number and date. But you are mentioning some other name of the firm. no other than there is two application I think. Yes. Same. But here, 26 Yes, good faith of and the same condition, same condition. Bhutegamro and Benziloma. And sir, that in my humble submission, that I will mention that this right to information, which is fundamental right, this means it's divine the democracy of the our government and nation. Then when it does not fall under the restricted area, the swift action from the government is needed because this is the beauty of the democracy. That let me know Article 19, this fundamental right, Article 91A, fundamental right to expression. It, synonym of the right to expression and this it is same. No, but here too we have also to see that he is questioning the authenticity of the registration of a certain firm. So now, where does the cause of action arise? Where does the locus standi come? You cannot simply go around and file RTI against certain firm which you don't have any locus standi or you don't have any cause of action. Right? Say for example, you and me file a tender, compete with a tender, and that is understood. And after that, I am being awarded the work. You can say, come and ask for the qualifications of my firm. But here, without any course of action or without any locus standi, I think we cannot be knowing the furnishing of information because there is a competent authority and agency which registers all the documents, which supervises, scrutinizes all the documents, and then finally they register them as class 1, class 2, class 3, class 4 qualification. The questioning upon their veracity or authenticity cannot be. So first thing is let them come. They have submitted an application. They have submitted a letter of absence that today they cannot be coming for the hearing, and they have requested to fix another date for the hearing. Then Yes. They have submitted this letter to me. So now they also have a fair chance of they should also be getting a fair chance of being heard. No? Like you might be not able to come on a certain day. So if you submit, sir, isn't this but this subject could be I don't think there is a locus standi on your line yes, of asking the details of someone else's qualifications. Simply, if see, take for example, can anyone come to the Guwahati High Court and ask your qualifications simply like that? He, his qualification certificate should be given to me. No, the court won't give it. exactly. Sir, this is personal. In fact, it comes under the personal document. But what I saw is this condition for the upgradation is just simply there must be extension of the regulated in favor of that part.
that sanction or the work sanction order, it does not, it is completely is opposite to personal, because any this NIT, the sanction order, it is completely for the interest of public person. Or moreover, it is subject to this discussion that my intention is it does not create any ground. There is uh, right to information that it falls under the Article 19. But anyway, let us fix another date because they are absent, no, the other party. And thing is, in fact, I have not, my client have not faced the ground. So, but because of this delay, I'm. I think they हम लोग का first hearing है. First hearing है. मेरा court. That's what I meant to say is because of this delay, I'm causing injury and loss. Because so that if I access this documents, then I can go for some a civil suit also, where I have No, but is it in the public interest of getting out his interest? Say, you applying for my qualification certificates, does it give any interest to the public? you know now the documents, this particular determination of the documents. Yes. Now determination of the documents, I don't this ask for this any international this passport and any other mark sheet, but it is documents determination of the documents is important. My short documents is just sanction of the and his work which has been done already. It is not any danger because this work has already been completed, and it's related to this work. It's related to the tender. Tender means public interest. It is not any individual. No, let us hear what you're stating. I can understand. You're asking a certificate issued by a certain work department saying that he has completed this work. I think that is also that is not an issue. That shouldn't be an issue for them also, but we have to hear them also. No? Yeah, That is why. determination of the document. Yes, That, yes. that opposite party I may can be say that understand. they have some. You are not asking other documents of the firm. In my understanding, if they have submitted 3 documents, out of 3 documents, if one is it does not come under the private document, then they can categorize Yes. this document. So this No, work experience is issued by a public department. A public department, a document issued by a public department should not be exempted. It should be given. Yeah. Because to make him qualify for upgradation, there has to be a qualification. There has to be a certificate that he has executed this much of work. So now that certificate issued by a public department, a public authority, and which is a public document. Let's see that's it. Let us hear the 10 March 130. this completely हमारा यहाँ पे क्या है ना 5 हम लोग कमिश्नर है एक ही कोर्ट है एंड हाईएस्ट केसेस आई हैव गॉट सम 500 केसेस बाकी में लेकिन एक ही हम लोग को स्लॉट मिलता है महीना में या वीकली इसलिए इतना देरी हो गया इतना लंबा चला गया But on that this criticism, that my client will not appreciate me. नहीं वो तो it's not about the satisfaction of your client. It is about the functioning of this court. No, he has to abide by the functioning of this court. He cannot be dictating this court. My humble submission, if Yes. there is any option, this period, any मैं कुछ आगे कर सकता है इसका नहीं तो नहीं सकेगा all fixed है all the dates fixed already so we cannot be altering आगे पीछे फिर करेगा तो people also other people also will be asking requesting for the same no on your discretion is already on the no but